अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज इस बजट वेज मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर अपना पक्ष रखने का हमको अवसर प्रदान किया। मैं अनुदान की मांगों को समर्थन करता हूं और इस सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश चौतरफा प्रगति के साथ आत्मनिर्भर भारत बनाने के हमारे संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित किया है। साथ ही में आई वुड लाइक टू थैंक्स और ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज श्री सर्बानंद सोनोवाल जी। Speaker sir, as the country knows, the country's maritime sector plays a crucial role in its overall trade and growth, with 95% of the country's trade volume and 65% of the trade value being undertaken through maritime transport. The long and contiguous coastline spanning 7,500 kilometers and extensive navigable inland waterways provide an excellent opportunity to tap an environment-friendly, water-based modal transport which can complete rail and road-based cargo management. To make India one of the top maritime nations in the world, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, MOPSW, has prepared a Maritime India Vision 2030, MIV 2030. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji unveiled and launched the vision document during Maritime India Summit 2021. Maritime India Vision 2021 would involve an investment of over rupees 3 lakh crore and unlock annual revenue potential for major ports immediately. So what are the aims and objectives of MIV 2030? Speaker sir, rupees 1.25 lakh crore investments planned in augmenting the infrastructure of major ports. First, to develop mega capacity ports in high potential areas of Gujarat, Maharashtra, Orissa, West Bengal, northeastern states, and other clusters at an investment of over INR 80,000 crores rupees. Increase the transshipment volumes of Indian cargo at Indian ports from 25% in 2020 to more than 75% by 2030 by operationalization of the port and development of transshipment zone at Bharatiya Bay in Andaman Nicobar Islands. Sir, the vision is promoting waste to wealth through sustainable dragging and domestic ship recycling. Enhance cruise infrastructure by developing dedicated cruise terminals at 12 selected major ports. Promote development of 5 themes for cruise tourism, that is pilgrim, heritage, Ayurvedic and wellness, island tourism, and regional international circuit, India, Sri Lanka, Myanmar, and Thailand. Sir, facilitate global cruise liners to make India their home port. Strengthening the maritime institutions to enhance India's training and development capabilities at par with global standards. This would also help in increasing India's share of seafarers from 12% to more than 20%, sir. So, this is the major aims and objectives of MIV 2030.
So how we can achieve this goal? What are the parts? What are the vision of our Honorable Prime Minister and what the ministry done in the last 7 years? Sir, we have 3 acts, as you know, the Major Port Authorities Act 2021. That act ये संशोधन किया गया था अध्यक्ष महोदय, जिसके कारण ये 2020-21 में ये मेजर पोर्ट्स अथॉरिटीज एक्ट 2021 हमने इसको संशोधन किया, जिसके कारण अध्यक्ष महोदय द लेजिस्लेशन प्रोवाइड्स फॉर रेगुलेशन operation and planning of major ports in India to face their administrative control and management upon the boards of major ports authorities. Next, the legislation ensures that the major ports transit from present service model to landlord model, whereby the ports would provide basic facilities which would be run by PPP on design, build, finance, operate and transport DBFOT model, sir. The legislation empowers major ports to perform with greater efficiency on account of increased autonomy in decision making and by modernizing their institutional framework. The legislation also provides authority to abolish tariff authority for major ports, TAMP, and empowers the board of each major port authority to fix its own tariff. It is to be noted, sir, the port authority will fix its own tariff scale of rates for usage of port assets and services by the users. Similarly, PPP concessionaires in public-private partnership projects have been given the power to fix tariff based on market conditions and such other conditions as notified. Speaker, sir, the next act which was जो कानून 2021 में हमने संशोधन किया, इनलैंड वेसल्स एक्ट 2021. इस कानून में भी to promote inland water transport across the country, the government has enacted new Inland Vessels Act 2021. The act replaces the Inland Vessels Act of 1917. Noted, sir. The act was enacted in 1917 and will promote, among others, development of trade, commerce through seamless movement of vessels across the country. The 1917 Act had provisions for restrictive movement of mechanically propelled vessels within the jurisdiction of the state government, requirement of endorsements, limited applicability and validity of certificates, non-uniform standards and regulations that varied from one state to another led to hindrances and hurdles in seamless navigation across states' development of the sector. The new legislation will cater to modern and contemporary needs and development of the inland water transport sector. It will help realize the potential of Indian water transport and promote it as a supplementary and eco-friendly mode of transport to congested road and rail network for movement of cargo passengers. The third act, Marine Aids to Navigation Act 2021. The act received the assent of the President on 30/7/2021. The act replaces the old Lighthouse Act, which was enacted in 1927. Noted, sir. This was enacted in 1927. After 6 years, हमने ये संशोधन किया. The act replaces the old Lighthouse Act 1927 and incorporates the global best practices, technological developments, and India's international obligations in the field of marine aids to navigation. The new act will facilitate harmonized and effective functioning of aids to marine navigation and vessels traffic services along the Indian coastline. Sir, this is 3 act which was
enacted and which was जिसके कारण हम सब लोगों ने आज Yes, Dilip Saikia, yes, sir. no sir. हमने pass किया, no. All these legislations are passed by this house. So I would share some few achievements. Yes, please. Some few achievements of the department in last 7 years under the visionary leadership of Narendra Yeah, Modi. please come to that. Please. The competitive strength, I want, किसी को मिर्ची लग सकता है, लेकिन मैं अनुरोध कर सकता हूँ किसी को मिर्ची न लगे. जो काम हुआ है 7 साल में, उसको सुनने का भी एक उनका भी धैर्य होना चाहिए. Sir, the competitive statement I am laying before also in the table. Due to various interventions for ease of doing business made by the ports under the ministry, India's ranking in trading across borders improved from 132 in 2014 to 86 in 2020, sir. Next, the cargo handling capacity of the major ports doubled to 1,560 million metric tons per annum MMTPA from 800 million metric tons per annum in 2014. Mind, sir, 800 MMTPA in 2014, and we have achieved in last 7 years 1,560, almost doubled and more than doubled, sir. The cargo handling capacity of the non-major ports also increased to 1,000 million metric tons per annum MMTPA from 689 MMTPA in 2014, sir. In 2014, it was 689, and in our regime, it is increased to 1,000 million metric tons per annum, sir. Turnaround time of vessels container reduced substantially to 27.38 hours in 2021 as compared to 41.76 hours in 2014, sir. Next, average draft in various ports also improved from 12.5 meters in 2014 to 14.5 meters in 2021. The plan is afoot to increase it to 18 meters by 2030 to enable the ports to handle capsize and bigger vessels. The dragging cost per annum, which was 2,500 crore, has been substantially reduced to rupees 819 crore per annum due to several policy interventions for improving business practice and transparency in administration, sir. Total operational income of the major ports also increased, sir. It is from 9,162 crore in 2014 to rupees 14,690 crores in 2021, sir. It was 9,000 crores, and in our regime, in our leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, it increased to 14,700 crores in 2021. The number of cruise passengers also increased manifold since 2014 from 1 lakh to 4,68,000 in 2020. Inland waterways, sir. The total number of inland waterways increased from 5. It was 5 in 2014, sir. It is increased to 111 in 2021, sir. An amount of rupees INR 1,619 crores was spent. 58 crores per annum, sir, for the development of national waterways since financial year 1986 to 2013-14. However, with growing focus towards inland water transport sector, expenditure of approx INR 4,644 crores has been incurred during last 8 years. That is since financial year 2014-15 until financial year 2021-22. The multimodal terminals on national waterways
increased from just 1 to 2014. It was in 1. 2014, the multi-model terminals, 1. Only 1 in UPS regime. It is increased to 4 in 2022. The inland water cargo increased manifold in these 8 years, sir. From 16 million metric ton in 2013-14 to 96 million metric ton till February 2022 during 2021-22, sir. Dilip Saikia ji, how much more Just time required? 5 minutes, sir. 5 minutes. Okay, sir. Please. Please conclude within 3 minutes, please. Okay, sir. Ports of call under Indo-Bangladesh Protocol route increased from 5 in 2014. It was only 5 in 2014. Indo-Bangladesh Protocol route ports of call. It is increased to 13 in 2020, sir. This is the achievement, sir. This is the success story of our shipping, port, and inland waterways department, sir, under the leadership of Narendra Modi ji, sir. सर नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ? मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूं. थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट 95% ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इज सराउंडेड बाय द फॉरेन कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज. हमारे पहाड़ है, जंगल है, सब है, लेकिन हमारे संपद भी है, संभावनाएं भी है. हमारे पास गंगा से लेकर ब्रह्मपुत्र, बराक से लेकर इधर सारे बांग्लादेश के हमारे जल हमारे पास में है, लेकिन हमारे पास में वो साधन नहीं था, वो हमारे प्लानिंग नहीं था, परिकल्पना नहीं था, विजन नहीं था हमारे सामने, जिसके कारण हमने कुछ नहीं कर पाया था. Shipping, waterways, ports, opening speaker from Assam. Yes. Because Northeast is also from Assam. Northeast get a major share in this success story. Sir, inland waterways की जो कनेक्टिविटी, इसके माध्यम से, जो जल परिवहन विभाग के माध्यम से हमारे साथ पूरे पूर्वोत्तर को जोड़ने के लिए मोदी जी ने जो हमको जो उत्साहित किया है, हमको जो सपोर्ट किया है, ये काबिल तारीफ है, सर. मोदी जी केवल भारत का प्रधानमंत्री है ऐसा नहीं है, अभी वो विश्व के नेता भी बन गए हैं और पूर्वोत्तर के एकमात्र अभिभावक के रूप में पिछले 70-75 साल में मोदी जी ने अपना भूमिका निर्वाह किया है, सर. पिछले 7 सालों में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरगामी प्रयासों के कई नतीजा है कि आज देश के 24 राज्यों में फैले 111 वाटरवेज को नेशनल वाटरवेज घोषित किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत के लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है और देश भर में लॉजिस्टिक कॉस्ट को एक मजबूती प्रदान, इकोनॉमिक सिस्टम में एक मजबूत करना है. महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करना चाहता हूं, इनलैंड वाटरवेज की संख्या 19, वो तो हम बोल लिया है. देश में वाटरवेज कार्गो मूवमेंट में सबसे ज्यादा लाभ किस क्षेत्र में हो रहा है? लो कॉस्टिंग, इको फ्रेंडली, फ्यूल एफिशिएंट, रिडक्शन ऑफ रोड एंड रेल कॉग्निशन एंड टाइम सेविंग. ये सबसे बड़ा हमारे फायदेमंद विषय है. आज नॉर्थ ईस्ट में महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि आजादी के बाद चित्तगंग पोर्ट जो बांग्लादेश में स्थित है, आजादी के पहले भारत में ही था. चित्तगंग पोर्ट बांग्लादेश में चला गया, पाकिस्तान में चला गया, मतलब जो नहीं जाना चाहिए था. हम भारत के विभाजन को भी हम दिल से हमने सपोर्ट भी नहीं किया था, फिर भी करना पड़ा. कुछ ऐतिहासिक इसका भूल है, वो बाद में हम चर्चा करेंगे. आपका 5 मिनट हो गया ना, समाप्त कीजिए. मैं महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि आजादी के बाद चित्तगंग पोर्ट भारत सरकार के अधीनस्थ नहीं था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के कुशल कूटनीतिक प्रयासों से भारत बांग्लादेश के बीच समझौता हुआ और पहली बार कार्गो शिप हल्दिया कोलकाता होकर सोनामुरा त्रिपुरा तक पहुंचा, जो हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही बड़ा उपलब्धि है, सर. ब्रह्मपुत्र नदी पर असम के सदिया से बांग्लादेश सीमा पर 891 किलोमीटर 891 किलोमीटर वाटरवेज 2 का राष्ट्रीय जलमार्ग 2 का निर्माण भी अपने अंतिम चरण में है, जिसकी घोषणा 1988 में हुई थी. इसमें 2025 तक हमने इसको पूरा करेंगे. 90% काम हमारा पूरा हो गया है, अध्यक्ष महोदय. ये भी हम बताने के लिए हम आज गौरव महसूस कर रहा हूं. इसका ट्रायल भी हमने चालू कर दिया है. अभी हाल ही में गुवाहाटी में हल्दिया से लेकर के
2000 टन्स लोहे हम वहां से असम के पांडु घाट तक लेके गया, जहां हमारे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी खुद उपस्थित थे, असम के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी उपस्थित थे। अंतर्देशीय जलमार्ग अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक के लिए उपयुक्त से ये हम सब लोग असम पूर्वोत्तर के बारे में समाप्त कीजिए। सैकिया जी समाप्त कीजिए प्लीज। समाप्त करता हूं मैं। लास्ट में आप बार बार समाप्त करने के बोल रहे, समाप्त करने का विषय नहीं है ये, इसको हम आगे बढ़ाने का विषय है। आपने 5 मिनट को हम जैसे आगे बढ़ाते हैं, आपने 5 मिनट मांगा, 5 मिनट हो गए। जी जी जी, इसको बहुत आगे बढ़ाने का विषय है, आगे बढ़ाएंगे भी। प्रधानमंत्री जी ने आग्रह रखा है कि हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट, हमारे इस जल मार्ग से, कार्गो से हम जितना भी हमारा देश के अर्थनीति को जोर दे सकते हैं, बल दे सकते हैं, ये डिपार्टमेंट के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने आग्रह रखा है। हमारे सामने लक्ष्य तय किया है, हमको $5 बिलियन हमको ये इनकम करना है अगले 5 ट्रिलियन नहीं, हमारे लिए 5 बिलियन बोला है, हमारे डिपार्टमेंट के लिए। अच्छा। 5 ट्रिलियन देश के लिए है, पूरा देश के लिए है। हम लोग अभी तक $3 ट्रिलियन में पहुंचा है मोटामोटी। $5 ट्रिलियन तक हमको जाना है, लेकिन $5 बिलियन हमको एक्सपोर्ट हमको करना है, ये हमारा आग्रह है। तो मैं फिर से एक बार इस सदन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी को, सर्बानंद सोनोवाल जी को, माननीय केंद्रीय मंत्री जी को, पूरे सदन को, आज इसका लाभ पूरा देश को मिल रहा है। और सिपेस्ट इको फ्रेंडली और देश के अर्थनीति को मजबूत करने वाला, आत्मनिर्भर भारत बनाने वाला ये विभाग के जरिए हमने जो अचीवमेंट हमने अभी तक किया है, इसको सपोर्ट सब लोगों ने करना चाहिए। किसी को इसके विरोध में, अगर किसी को कोई कुछ काम करना है तो बोलिए, लेकिन इस डिपार्टमेंट के विरोध में, काट मोशन के विरोध, इस प्रस्ताव के विरोध कुछ मत बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।